Assalamu alaikum students. Today I'm going to start lecture number 6 on SQL queries. So I'm going to cover the SQL Alter table command today and some more arithmetic expressions. So this is the SQL Alter table command. It is used for making some modifications or changes to the डिज़ाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल लाइक हमारे पास पहले से डेटाबेस के अंदर एक टेबल मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम उस टेबल के अंदर कॉलम्स को मॉडिफाई या चेंज करें। तो टेबल के डिज़ाइन के अंदर चेंज के लिए जो है हम अल्टर का कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक एक टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं तो हम ये करते हैं कि हम उसमें 6th या 7th कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो है अल्टर का कमांड यूज़ करेंगे। या इनके अलावा हम चाहते हैं कि हम किसी कॉलम को ड्रॉप करें या उसके हम टाइप को चेंज करें, so for that purpose we use the alter table command. Okay, so alter is used to change the design of the already defined table. This is the syntax. You write alter table, इसके बाद table name and इसके बाद जो है the action can be to add a column, rename a column, change or drop a column. Here you can see the proper query syntax. Alter table, table name, add column, this is the column name, उसका टाइप क्या होगा, लाइक इंटीजर है, varchar etc. ये यहाँ पे आप ये लिख देंगे। इसके बाद you can also define a default value. So let me run a practical query on this alter command. Here you can see this is your existing customer table, as you remember, because in the previous tutorials I have run multiple queries for practice on this customer table. You can see here we have 4 different attribute or column names. It is a customer ID, customer name, a customer address and postal code. So let me make some changes to this table, and I would like to add a new column here with the name like salary. Okay, it's a dummy attribute name salary. So what I would do, alter table, table, or the table name is the customer. Okay, then what I would write here is 8, the column name would be salary and it would be suppose varchar या integer, आपकी मर्जी है, आप जो भी करना चाहें। Okay, it should be not null or null. Okay, so let me say leave it like this. Okay, execute, command is successful. Okay, now let me verify whether a new column has been added or not. Select from customer table. Okay, run this query and you can see here the salary column has been added. Similarly, you can add some more columns to this table, like if I add another table with the name cell number is the phone number, and if it is integer, so let me define it as an integer, execute करें इसको, it is successful, and now select this table to verify. So the 6th attribute has been added. So this is how you can add some more columns to the existing table. So if someone wants to drop this table, तो उसके लिए query किस तरह होगी, alter table customer, okay, drop column suppose salary. Okay, let me write it cell. Okay, click on this and execute. The command is successful. Okay, now check the table status. You can see here the cell column is deleted. Okay, similarly you can drop the second created column salary. Select this one and execute. Again the command is successful. Select, execute.
Okay, so this column is also deleted. So this is how you can add and drop columns in the existing table. Okay, so this was alter command. Now let me uh, run some arithmetic expressions. Okay, arithmetic means that where we can apply the add, subtract, multiply and divide uh, arithmetic operators. So for that let me read this. What is arithmetic expressions? You may need to modify the way in which data is displayed. So perform calculations or look at what if scenarios. देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हम इससे यूज़ करते हैं कि समटाइम्स यू नीड टू रिट्रीव सम डेटा। लाइक आप चाहते हैं कि हम सैलरी को रिट्रीव या डिस्प्ले करें और सैलरी जो है वो सपोज 10,000 है एंड इफ यू वांट टू ऐड सम टेक्स्ट टू दैट सैलरी लाइक 3,000 plus 500. Okay, so it needs some changes. So for that we apply arithmetic expressions. Like you can see here in the example, select e name is the column name, salary is the salary name and salary plus 300 यानी सैलरी के साथ 300 ही ऐड करेगा and then it would be displayed from the employee table. Okay, so let me apply all these arithmetic expressions. Here is another example. You can see here also a table is given. After that, here is the e name is the employee name, so display the employee name. Then salary, so salary is here, it's also displayed. 12 into salary plus 100, 12 plus salary plus 100. so सैलरी के साथ इन्होंने मतलब 12 को मल्टीप्लाई किया हुआ है एंड देन 100 इज बीन एडेड. सो उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया हुआ है, यानी रन टाइम पे इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे चेंज हुआ है. सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. This is another example. You can display data in this form. Okay, so add brackets to the way in which you want to display the result. Okay, and this would be the final result. So let me write a few queries for the arithmetic expressions. So here is the postal code 2500. So if I want to display this like 2500 plus 100. okay, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, select क्या डिस्प्ले करें, कस्टमर आईडी डिस्प्ले करें एंड पोस्टल कोड डिस्प्ले करें, कॉमा पोस्टल कोड जो है उसके साथ प्लस 100. ओके, फ्रॉम कस्टमर टेबल. ओके, सो सेलेक्ट कस्टमर आईडी पहला कॉलम ये वाला, पोस्टल कोड लास्ट वाला कॉलम एंड पोस्टल कोड प्लस 100, यानी पोस्टल कोड के साथ 100 आप ऐड करेंगे फ्रॉम द कस्टमर टेबल. सो सेलेक्ट दिस क्वेरी, एग्जीक्यूट इट. सो हियर यू कैन सी कस्टमर आईडी हमारे पास आ गया, पोस्टल कोड आ गया एंड इट इज द 2600. इट मींस 100 हैज बीन एडेड विद दिस पोस्टल कोड. ये 2600 है तो ये 2700 हो गया है, 1500 से लेके ये 1600 बन गया है and so on. So this is how you can apply some arithmetic expression. Like here if I write 10 into postal code plus 100, so now you will see that it would be changed and here you can see more modification has been done to the existing data. So this is how you can apply these arithmetic expressions. Okay, so this was another example of that. Okay, now let me give you another topic here, that is defining a column alias. Okay, so alias जो है इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं किसी कॉलम को रन टाइम पे रीनेम करूं. ओके, rename a column heading is useful in calculations. Okay, so immediately follow column name with optional as. Like if I want to display like this, select employee name as AD, यानी इसका नाम होगा AD. Okay,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो लेट मी रन इट अगेन। देखिए यहाँ पे आप देखें कि ये जो कॉलम नेम है, ठीक है, इसको इसने कोई भी नाम नहीं दिया। सो एलियस का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम इस को एक नाम दे दें, ठीक है। तो फॉर देट व्हाट आई वुड यूज हेयर, दिस इज द न्यू डेटा डिस्प्लेड आफ्टर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इज modified। चले मैंने इसको नाम दिया है modified। ओके, दिस इज द कॉलम नेम फॉर दिस फ्रेश डेटा, ठीक है। व्हाट यू वुड राइट, mathematical expressions is, and this is the fresh column name। okay, select, execute, you can see here this is the column name modified। okay, or if you write some sensible name like new code, okay, इसका नाम हो जाएगा new code। okay, select this one and execute this one, you can see here the new code is this one। okay, so this is what it's called alias। okay, again table name is and the fresh name, तो ये आप इनके साथ लगा सकते हैं। okay, using the concatenation operator। concatenation means कि आप चाहते हैं कि मैं किसी भी दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करूं, लाइक सेलेक्ट फर्स्ट कॉलम द सेकंड कॉलम, दोनों के बीच में आप क्या करें, ये जो आपके सामने ऑपरेटर है, ठीक है, लाइक द और ऑपरेटर। ओके, इसको हम अक्सर और भी कहते हैं इन केस ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स। सो वो लिखते हैं, एज लिखते हैं, इसके बाद फ्रेश कॉलम नेम, यानी दोनों के मर्जिंग से जो ना दोनों जब मर्ज हो जाएंगे ना आफ्टर कंकैटिनेशन, तो उसके बाद इसका जो फ्रेश नेम होगा वो ये वाला होगा, एंड देन द फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो एलियस जो है और ये जो कंकैटिनेशन है, इसको आप लोग खुद ट्राई करें। ओके, इनके अलावा और भी इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक यू कैन ऐड सम string between two attributes like employee name, इसके बाद आएगा is a and then the job, after that you can insert a fresh column name। okay, like you can see here this is the employee name is a clerk, यानी is this is the first attribute, this is the second, and इनको merge किया गया है, and in between these two we have is a string। okay, so this was, ये आपको try कर लें, you will get some good idea out of this। okay, this was the end of today's lecture। inshallah see you in the coming lecture with some with um, extracting data from two tables while defining the foreign key, primary key, and SQL joins। thank you so much for listening। Allah Hafiz।